122. Alfred Amaia. Calculate Alfred's revised tax-adjusted trading profit or loss for 7 months ended 31st of March 2023. Your computation should commence from draft tax-adjusted trading profit 63,000. Draft tax-adjusted trading profits 63,000. 5,000 incurred during Jan and February on marketing campaigns with business. Draft tax registered trading profit is before adjusting any deductions arising from the following. He commenced trading from September, ठीक है, ये 7 में September, October, November, December. 5,000 incurred during marketing campaign. So sorry. Premium of 30,000 paid on 1st of September 2022 to acquire a 10-year lease on workshop used for ट्रेड पर्पसेस। तो यहाँ पे हम लीज कॉस्ट ही माइनस करते थे, तो यहाँ से मैं वही माइनस करूंगा गाइस। इनकम इज इनटू 41 डिवाइड बाय 50 तभी नेगेटिव में जाएगा ना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस वगैरह भी। तो फिर इसी को डाला। ये भी ठीक है। Cost of golf day on 31st of March 2023 for a group of Alfred's largest clients totaling 1,000. Cost of golf day नहीं लगता ये रिकवरेबल है, जीरो रख रहा हूँ इसमें इसको। एक्सपेंडिचर 1,16,000 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गेन्स बनाना पड़ेगा फिर इसके लिए, सॉरी कैपिटल अलाउंसेस। मेन पूल, स्पेशल रेट पूल, अलाउंसेस। Purchase of a car on 16th of December 2022. The car had CO2 emission
इसको बढ़ाने के बाद so the car has issues of 44 grams per kilometer and is used by Alfred as employee. WDA 18%. But less ये capital allowances. Tax adjusted trading profits. Adjusted trading. Okay, with profits नहीं है क्या? Losses है trading loss. So now this would be value sum. Put this also in negative. So answer is 63955 in negative मेरे हिसाब से. 7 month period. I think मैंने ये सब 7 month period के लिए किया है इसको. Answer should match. 61955. What the hell? 5,000. Advertising expenses was 7,000, right? देखने में मिस्टेक हो गई यार. देखने में मिस्टेक कैसे हो सकती है? देखने में मिस्टेक कैसे हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे 7,000 यहाँ पे 5,000 आएगा एंड देन यहाँ पे 5,000. लेट्स गो अहेड. कैलकुलेट द इनकम टैक्स. तो और कुछ नहीं पूछा था ना इसमें? नहीं पूछा था. वर्किंग से सारे हमने किए हुए. लिंक्स भी सब दे देंगे. कैलकुलेट द इनकम टैक्स टेबल पे एम of income tax payable by India for the tax year जो भी particulars pounds pounds. Gross annual salary of 80,000 to salary of India का थोड़ा हमें लगता है. It will be a hefty bulk answer. 9 marks के लिए पूछा. तो इसी बात है इतना बड़ा. For social January 2023, Airgore Limited provided India with petrol company car. Car had a list price of 25,000. Although Airgore received a discount and only paid 3,500, the car exploded and 72 grams per kilometer. Airgore did not provide any fuel to private. That's okay. List price 5,000. 52 grams की कार है यानी कि पेट्रोल कार है. So I think it's 15% if I'm not mistaken. देखना पड़ेगा. हमें रेट्स दिए जाते हैं कि नहीं इस केस में. 50 to 54 grams में 15% है. ओके, परफेक्ट. 15%.
Hello. From from 1st of January 2023, हमें proportionate करना है. 3 months के लिए इनको 3/12, 3/12 भी करेंगे मुझे सर, तो पूरे 12 महीनों के लिए ही है ये बंदी भी. हाँ, ये बंदी पूरे 12 महीनों के लिए, सो दैट्स वाई कार बेनिफिट would be this. Working out reference बाद में देंगे. Next, since 6th of April 2020, Ergot Limited has provided EMEA with a living accommodation which qualifies as job-related accommodation. The annual value of the property is 23,000, and Ergot pays a rent of 2,500. But the living accommodation is qualified as job-related. So job-related accommodation. So whenever a living accommodation qualifies as job related, we don't charge anything on that. हम zero लगा देते हैं सीधा सीधा. Next, तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है. We can give a note later कि as the living accommodation qualifies as job related, it is not a taxable benefit. और हाँ, it is not चार्जेबल टू टैक्स. ये हम लिखेंगे टैक्सेबल बेनिफिट नहीं, क्योंकि वरना हमें उसके ऊपर 20% चार्ज करना पड़ता. उसके बाद अर्गोल हैज डिडक्टेड इनकम टैक्स अंडर पेई ऑफ 19,432 फ्रॉम इंडिया सैलरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर. तो ये पेई में नीचे माइनस होगा टीडीएस. लिख के रखता हूँ वरना आई फॉरगेट. लेस पेई 19,432, 19,432. क्या टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है वो है प्रॉपर्टी इनकम का. ठीक है. Since 6th of April 2020, and Amia has let out her own house unfurnished at a rent of 1,200 per month. Amia received 13 months during rent during the tax year 22-23. Amia has a mortgage which she took to acquire the house. She made mortgage payment of 6,000, including interest of 2,600. Okay. रेंटल्स उसको एक्चुअली मिले थे 13 मंथ्स के. कितने मिले थे उसको रेंटल्स? 1,200, इंक्लूडिंग लेस. यहाँ पे मैं करूँगा इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज. इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज यहाँ से होगा 2,600 इंटू 0.2. ये 20% पे रहता है दैट द प्रोविजन. अब आता है लास्ट मॉर्गेज पेमेंट्स. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस मॉर्गेज पेमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल गेन्स में आया करता था, सो आई डोंट थिंक ये इसमें आएगा. तो टोटल प्रॉपर्टी इनकम would be this minus, actually no, property mortgage is to come in inheritance tax. Hmm. She has made mortgage payments. They must be related to the property itself. Let's start. Let's just write 6,000 here and see what happens later. Last में an insurance premium of 800 for the house in respect of the year ended 31st December 2022. Then on 1st of December 2022, she paid an insurance premium of 1,720 for the year ended 31st of December 2023. 1 minute. On 1st of December 21, she paid an insurance premium of 800.
तो हम तो हमेशा कैश बेसिस पे ही चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, हम सिर्फ और सिर्फ जो इस साल में इंकर किया है वही बताएंगे, विच इज 1 दिसंबर 2022 को हमने जो 1250 पे किया था, विल ओनली शो दैट फिगर, दैट्स इट, इतना ही दिखेगा। एंड या वी डन हियर। सो टोटल इनकम हमारी जो आती है विच इज लेस टैक्सेबल इनकम। Three sacrifice 700, and this minus this 20%, 40%. Wait. So total income tax payable would be this minus this 3195. However, still your mortgage interest is something which we are doubtful about. तो यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले हमने सही किया कि नहीं। 5595 is the answer. Okay, let's check. काम करके प्रॉपर्टी इनकम में से हम ये फिगर हटा के चेक करें, 5595, तब जाके हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो मॉर्गेज को एक्चुअली नहीं डालना था, लास्ट मोमेंट पे हमने डाला, वो गलती की हमने। मॉर्गेज इंटरेस्ट नहीं आएगा हमारा, इशू था ओनली अबाउट मॉर्गेज, मेड मॉर्गेज पेमेंट्स ऑफ 6000, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड वो, बिकॉज आई थिंक मॉर्गेज इंटरेस्ट जो इनहेरिटेंस टैक्स में आया करता था, दैट वाज द पेमेंट कि हमें सबसे एंड में जब हम हमारा एसेट ट्रांसफर करते हैं, हमारा हाउस जब हम करते हैं ट्रांसफर, हमें हमें मॉर्गेज उस वक्त पे करना है। शायद इस वजह से हमें यहाँ पे मॉर्गेज इंटरेस्ट को नहीं डालना था। बाकी द होल आंसर इज करेक्ट, क्योंकि बाकी और कोई मिस्टेक थी नहीं, इसमें ओनली मिस्टेक, कुछ और नहीं पूछा गया था शायद। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड